हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। जल्दी से लाइव आ जाइए। आज हम आपको करवाने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 30 MCQs। जी हाँ दोस्तों, ये 30 प्रश्न, जी हाँ 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको हिलाकर रख देंगे। जी हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर बार आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊं। तो इसी सीरीज में मेरा एक और यहाँ पर मैं अपना एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नए क्वेश्चंस मिले। एंड टुडे वी आर जस्ट हेयर विद इंग्लिश। जी हाँ, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में लेकर आया हूँ और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। वी विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस सीरीज एंड हेयर वी गो एंड वी स्टार्ट दिस सीरीज। एंड इफ यू नॉट शेयर सो प्लीज वन टाइम शेयर, please one time share on your WhatsApp, Facebook and some groups. Okay, so here we go. And first question on your screen: gas exchange take place in the, yes, you are just write the answer: pharynx, larynx, alveoli and trachea. So what's the right answer of you have choose? So you can choose here. So I'll not give you more than 5 second time. Okay, आपको सिर्फ 5 सेकंड ही टाइम मिलेगा. After that we will just reply the right answer. So here the right answer is alveoli. Okay, the gas exchanges take place in the alveoli. Yeah, here is, you can say it's the smallest units of alveoli of the respiratory system, and in the alveoli, or you can say it's a air sacs, the gas exchanges. Okay, next question on your screen. Question number here is second. द एरिया बिटवीन द लंग्स इज नोन एज द, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिंदी भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि जो आपका लंग्स जहाँ पर आपका जो रहता है, ठीक है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? बिटवीन द लंग्स, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? द एरिया बिटवीन द लंग्स इज नोन एज द थोरैकिक केज, मेडिस्टिनम, प्लूरा और हेलियम. Yes, I'll just also trying to draw the lungs, so you can just, here's a what first lung and here is a right lung. Okay, so these are the lungs. So what's the lungs, and here is a between the area of these, what you will call? So it's a call मेडिस्टिन. मेडिस्टिन इसको कहा जाता है, ठीक है. ऑप्शन सेकंड की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 3. इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय. इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का यहाँ पर हिंदी में इसको बोलेंगे अनैच्छिक, ठीक है. इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द pulmonary arterioles, the bronchioles, the alveolar capillaries network, or nervous neurons located in the medulla and pons. So who will control involuntary breathing? So here is the right option is neurons located in the medulla and pons. These control of your involuntary breathing. Next question on your screen. Question number here is fourth number. The sternal angle is the, जो sternal angle है उसको क्या कहा जाएगा? What you will call? Suprasternal notch, expoid process, scapula, angle of Lois. So what's the right answer? Yes, here's the right answer is angle of Lois. Next question. Soft and low pitched breath sound normally heard over most of both lungs are. आपका यहाँ पर जो सॉफ्ट और जो लो पिच्ड ब्रीथ होती है उसका जो साउंड है नॉर्मली आप हियर कर सकते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ बोथ लंग्स आर. उसको कैसे? ब्रांचियो वेस्कुलर, ब्रांचियल्स और ट्रैकियल्स और वेस्कुलर. So here is the right answer is vesicular. Option D is the right here. Next question on your screen. Question number here is 6.
and I think those who are just trying to search in Hindi, so I think today is not happy that viewers, because today's series totally I just trying to English, because it's a very and high demands of the our subscriber and viewers, those who are just again and again just request that, sir, please provide an English question series. So here is an English question series, like Jammu Kashmir and Odisha sides viewers, they want in English. High pitched breath sounds are best heard by. आपकी जो हाई पिच्ड ब्रीथ होती है, उसका जो साउंड होता है, हाउ कैन यू लिसन, हाउ कैन यू हियर, आप कैसे उसको सुन सकते हैं, इट्स अ बेस्ट वे. द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, both the bell and the diaphragm of the stethoscope, a stethoscope with tubing at least 20 inches 50 centimeter in length. यहाँ पे चलिए मैं कोशिश करूँगा, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक स्टेथोस्कोप. सो हेयर यू कैन जस्ट सीन, आपका स्टेथोस्कोप होता है, उसमें आपको दो ऐसे वॉल मिलेंगे और उसमें ये आपका ऐसे रहेगा और फिर एक उसमें आपकी ट्यूब लगी होती है और ऐसे. तो ये वाला जो होता है, इसमें आपका मेन यहाँ पर बेस्ट अगर आपको साउंड सुनना है, सो व्हाट्स द मेन. सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप. जो डायफ्राम होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, इसके ऊपर आपने एक मेम्ब्रेन देखी होगी, ठीक है, एक यहाँ पर पर्दा लगा रहता है, ठीक है, वो आपका डायफ्राम कहलाता है, ठीक है. उसी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेटरी का जो सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो आपका साउंड आता है, हाई पिच जो ब्रीथ होती है, उसका साउंड सुन सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. साउंड्स ड्यूरिंग articulations of the lungs are called. Louder or clearer voice sounds during articulations. ठीक है, जब आप रेस्पिरेट करते हैं तो उसमें आप कैसे सुन सकते हैं, ठीक है. एडवेंटियस साउंड्स, एगोफोनी और ब्रांचोफोनी और फर्मिटिस. What's the right answer here? So here is the right answer, that louder and clear voice sounds during articulations of the lungs are called bronchophony. Next question on your screen. Which continuous breath sounds are relatively high pitched with a hissing or shrill quality? I think when you are just taking breath on that time, you have just also observed that the sounds of hissing. ठीक है, आप जब सांस लेते हैं तो उसके अंदर आपकी हिसिंग की और श्रिल की जो आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो उसको क्या यहाँ पर पूछा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे. कॉर्सिक्रेल्स, रॉन्ची, वीज और फाइन क्रैकल्स, उसको क्या कहा जाएगा रिलेटिवली, जो आपका रहेगा यहाँ पे हाई पिच्ड विद ए हिसिंग. ठीक है, जब भी आप सांस लेते हैं तो सांस में आवाज़ आती है. आपने ऐसे पर्सन्स को महसूस भी किया होगा, दोज हु आर व्हेन आर जस्ट दे टेक ब्रीथ और ऑन द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, द यू कैन ऑल्सो द साउंड्स कैन यू हियर. सो इसको कहते हैं वेज. ऑप्शन सी इज द राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Normal breath sounds here over most of both lungs are described as being. Normal breath sounds here over most of both lungs are described as being. नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स आपका रहता है, ठीक है, आप उसको सुनते हैं तो जो आवाज़ आती है वो आपको सुनाई देती है, तो उसको यहाँ पर दोनों लंग्स से, ठीक है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे. लाउड, intermediate, very loud or soft. So the sounds you can hear with the help of stethoscope, and this is described as being soft. Option D is the right here. Next question on your screen. Question number here is 10. Bronchial breath sounds are normally heard.
आपकी जो ब्रांचियल ब्रीथ्स होती है उसका जो साउंड्स है आप नॉर्मली सुन सकते हैं। कैसे सुनेंगे? और मोस्ट ऑफ बोथ लंग्स बिटवीन द स्कैपुला over the mandibular and in the last over the trachea in the neck. Branchial breaths sounds are normally heard. कहाँ से सुनाई देगी आपको ये बताना है. So here is the right option is over the mandibular. Option C is the right here. Next question on your screen. Question number here is 11. Which is correct about vascular breath sounds? यहाँ पे जो वेस्कुलर ब्रीथ्स है इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें से करेक्ट क्या है? यू कैन चूज हियर. इन रेस्पिरेटरी साउंड्स लास्ट लॉन्गर देन एक्सपिरेटरी वंस. इन ऑप्शन बी, इन रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी sounds are about equal. Option C, expiratory sounds last longer than in respiratory ones. Or option D, in respiratory and expiratory sounds are distinguishable. So here's the right option is option A. In respiratory sounds last longer than expiratory ones. ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट लॉन्गर रहेगा जो आपका इन रेस्पिरेटरी होता है. यहाँ पे ये आपकी बड़ी ब्रीथ रहती है और आपकी जो एक्सपिरेटरी होता है जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये आपकी छोटी होती है. ठीक है, लास्ट लॉन्गर यहाँ पर हो जाएगा आपका इन रेस्पिरेटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर हेयर इज 12. विच प्रिकॉशंस not would you hear over the airless area in articulus? Which precautions not would you hear over the airless area in articulates? So what's the right answer? You can choose dull, resonant, flat or hypersonant. Hypersonant. So here's the right option is dull. Option A is the right here. Next question on your screen. Although the exact cause is unknown, pulmonary fibrosis has most commonly been associated with. यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपको होता है उसका मोस्ट कॉमनली किसके साथ में एसोसिएट रहता है? एस्थमा, सिगरेट स्मोकिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्वेलो ब्रीथिंग और इमोबिलिटी. पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपको ये कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ डिजीज. सो व्हाट्स द मेन कॉमन? Yes, it's a due to or it's a main common in cigarette smoking. Okay, option B is the right here. Next question on your screen. Question number 14. Which most commonly suggest? किसको which most commonly suggest किया जाता है आपको बताना है. Secretions in large airways, abnormal lungs tissues, airless lung areas or narrowed airways. यहाँ पर देखिए विजेस का मतलब है कि व्हेन यू आर जस्ट टेक ब्रीथ ऑन दैट टाइम यू कैन जस्ट हिसिंग एंड विज साउंड्स यू कैन हियर. यहाँ पर आप जब सांस लेते हैं तो उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगती है. सो उसको यहाँ पर किससे सजेस्ट किया जाता है? यस, सो हियर द राइट ऑप्शन इज नैरो एयरवेज. जी हाँ, यहाँ पर जो सांस लेने का आप ये कह सकते हैं इट्स अ पाथ ऑफ योर एयर रेस्पिरेशन. सो दैट पाथ विल बी नैरो. ओके, नैरो हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा. हिंदी में शायद इसको संकीर्ण कहते हैं नैरो को. ठीक है, तो संकीर्ण रास्ता बन जाता है और जब आप सांस लेते हैं तो उसमें से आवाज़ आने लगती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर हेयर इज 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए पार्शियल obstruction of the larynx or trachea and demands immediate attention?
raunchy, pleural rub, stridor और mediastinal crunch। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, एक ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब है यहाँ पर कुछ उसमें बाधा आ जाती है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो लैरिंग्स और ट्रैकिया में होती है एंड डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन। तो किस कंडीशंस में रहेगी ज़्यादा आपको डिमांड? सो व्हाट्स द राइट आंसर हियर? यू कैन चूज यस। सो हियर द राइट ऑप्शन इज प्लूरल रब्स। ठीक है, on the conditions of plural verbs you have just immediate attentions you have demand. Next question on your screen, question number 16, which of the following would you expect to the to find over the involved area in a patient with lobar pneumonia? चलिए, एक पेशेंट है निमोनिया का, ठीक है, और उसको, हाँ, लोबर निमोनिया का पेशेंट है एक, और तो उसको यहाँ पर आपने बताना है कि एक्सपेक्ट टू फाइंड ओवर द इन्वॉल्व एरिया। ठीक है, इन्वॉल्व वेसिकुलर ब्रीथ साउंड्स, एगोफोनी, डिक्रीज्ड टेक्टाइल फर्मिटीज और मफल्ड एंड इंडिस्टिंक्ट ट्रांसमिटेड वॉइस साउंड। सो इसको कहा जाता है एगोफोनी। ऑप्शन बी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंडिंग्स इन ए पेशेंट्स विद pneumothorax includes finding in a patients with pneumothorax includes, यहाँ पर इसमें क्या इंक्लूड रहेगा? A dull percussions notes, decrease the absent breath sounds, increased tactile firmities or late respiratory crackles. In respiratory, here is the right option is option decrease the absent breath sounds। ठीक है, आपका जो साउंड्स है उसका जो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर here is 18, respiratory center is located in the respiratory center is located pneumotaxic center, medulla oblongata, alveoli or appendic center। respiratory center is located, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है आपका वो कहाँ आपका लोकेट है, आपको ये बताना है, जो आपकी हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज मेडुला oblongata। So it's a main, you can say it's a control your respiratory. Next question. So, and if you are not subscribe our channel, so please subscribe our channel and also press the bell icon to get the latest video notification, and please like and dislike. It's your options. You can like or dislike. What's your choice? If you like our series, so please just press the like button. So next question on your screen. Bronchi branch into the tubes of smaller diameter। जो आपकी ब्रोंची होती है, ब्रोंची या फिर आप इसको ब्रोंकाई कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको ब्रोंकाई बोलते होंगे, मैं ब्रोंची बोलता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू विल कॉल। सो यहाँ पर इसमें ये पूछा गया है कि लेस देन 1 mm, जो आपका आपके जो स्मॉलर ट्यूब्स होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रोंची, व्हेन द ब्रोंची विल नैरो ऑन दैट टाइम, व्हाट्स द कॉल, आप उसको क्या बोलते हैं? एंड इट्स नोन एज माइक्रोट्रैकिया, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली और एस्टिनियन ट्यूब्स।
सो इसका राइट आंसर इज ब्रोंचियोल्स। ठीक है, जैसे जैसे आपकी ब्रोंची है वो आपकी नैरो होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट को जब 1 mm का, ठीक है, लेस देन 1 mm आपका जो डायमीटर है रह जाता है इसको, तो इसको कहते हैं आपका ब्रोंचियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर द अमाउंट ऑफ एयर inhaled and exhaled with each breath? What is the instrument? What is the name of that instrument which is helped to measure inhale and exhale breath? Sphygmomanometer, hygrometer, stethoscope, or spirometer? And you can say this questions, I think in yesterday class is repeated. जी हाँ, यहाँ पर रिपीट हो चुका था, वहाँ पर गीला स्पायरोमीटर लिखा था। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज स्पायरोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फेरिंग्स? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो आपकी फेरिंग्स के बारे में इनकरेक्ट रहेगी। Organ of the upper respiratory tract, contact to the larynx, contributes to the productions of speech, composed of smooth muscles. So here is the incorrect regarding your pharynx is composed of smooth muscles. Option D is the right. Next question on your screen. Question number here is 22. Emphysema, a chronic disorder, is high in cigarette smoker. In such cases, the fill in the blanks of the persons is or are found damaged. एम्फाइसीमा आपका एक ये कह सकते हैं कि डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो स्मोकर होता है, सिगरेट स्मोकर होता है, दोज हु आर अगेन एंड यू कैन से इट्स अ चेन स्मोकर. सो इन दैट cases the persons damaged what organ get damaged? Plasma membrane, alveolar wall, or bronchioles, or respiratory muscles? Yes, those who are cigarette smoker, in that persons get damaged the alveolar wall. एल्वियोलर वॉल्स है वो आपकी एल्वोली की डैमेज हो जाती है. ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो ऑक्सीजन स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है, इट इज ऑल्सो डैमेज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 23rd. अस्थमा इज ड्यू टू elasticities of lung is reduced, degradations of alveolar wall, bronchioles constrict due to muscles spasms, और डैमेज्ड इन डायफ्राम. अस्थमा किसकी वजह से, आपको ये बताना है. So here is the right option is bronchioles. Option C is the right here. Bronchioles constricts due to muscle spasms. Next question on your screen. Amount of air in the lungs that remains after deep breathing is called. When you are taking deep breathing, okay, on that time the amount of air in your lungs remains after deep breathing is called. उसको क्या कहा जाता है? Dead space, residual volume, vital capacity, ventilation rate. Yes, when you are just taking deep breathing, on that time the amount of air in the lungs called residual volume capacity. Next question on your screen, question number 25th. The amount of air in
The amount of air a person take in during normal restful breathing is called. In the resting positions, you are taking normal breath. So on that time, the breathing is called dead space, tidal velocity, or ventilation rate. जब आप रेस्टिंग कंडीशन में आप अपना सांस लेते हैं, ठीक है, जो आपने एयर ब्रीथ अंदर किया है, जो एयर अंदर गई है, ऑफ द दैट अमाउंट्स व्हाट विल बी कॉल्ड. So here is the right option is tidal volume. Okay, tidal volume कहेंगे when you are just taking normal breath on that time the air amounts called tidal volume. Next question on your screen, question number 26. What protect the most membranes of the respiratory tract? आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर एक मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा आपको बताना है. म्यूकस एंड सीलिया. ऑप्शन बी में है यहाँ पर ए सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, कि इसके अंदर एक सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग है. और ऑप्शन सी में बताया गया है ए पेबली एपिडर्मल सरफेस, की एक पेबली एपिडर्मल सरफेस है. और ऑप्शन डी में है एन एसिडिक ग्लैंड्स. Yes, you can say it's a the most membranes of your respiratory tract is protected by म्यूकस एंड सीलिया. ठीक है, म्यूकस और जो सीलिया होता है उसके थ्रू आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हियर इज 27. बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज. यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज किया जाता है बॉडी टिश्यूज से, ठीक है, आपके ब्लड में. तो इसको प्रेजेंस कितनी रहेगी आपको इसके बारे में बताना है. 70% कार्बिनो कार्बिनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एज बायोकार्बोनेट. और ऑप्शन बी में है कार्बिनो हीमोग्लोबिन्स इन आरबीसीज. और ऑप्शन सी में है बायोकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज. और ऑप्शन डी में है फ्री CO2 इन ब्लड प्लाज्मा. सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज बायोकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज. ठीक है, आपका बायोकार्बोनेट के रूप में, ठीक है, आपके ब्लड प्लाज्मा और आरबीसीज में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, जो सही नहीं है. It's a questions also in the term of respiratory system. Respiratory system से relate करता है क्वेश्चन. The nasal cavity warms and humidifies the air before it enter the lungs. Options D. The right lungs is composed of 3 lobes, but the left lungs has only 2 lobes. Lungs volumes and vital capacity measures lung functions. And options D, the vesical pleura is in direct contact with the chest wall. So I think here is the right option is options D. The vesical प्लूरा इज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चेस्ट वॉल. ठीक है, जो आपका प्लूरा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है किसके, चेस्ट वॉल के. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, जो आपका प्लूरा फ्लूइड्स है वो एक प्लूरा मेम्ब्रेन में रहता है. ठीक है, आपका जो रिब कीज है, आपकी जो रिब्स की एक कीज बनती है, थोरेसिक कैविटी बनती है, उसमें आपका प्लूरा फ्लूइड प्लूरा मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है. Next question on your screen, question number here is 29. The kind of tissues that forms the supportive structures in our pinna or external ears is also found in. यहाँ it's a kind of tissues that forms of supportive structure. ठीक है, ये एक supportive structure है आपके external ear में. और इसको कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना. इट्स ऑल्सो फाउंड इन टिप ऑफ द नोज, वर्टिब्रा, नेल्स और ईयर ऑसिकल्स.
So here is the right option is tip of the nose. Next question. Question number 30. Which two of the following change usually tends to occur in the plane dwellers when they move to high altitude, or you can say it's a 3500 मीटर और मोर. ठीक है, जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं, यहाँ पर जो हाइट रहेगी इसमें 3500 एंड इससे ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस आते हैं. ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है. इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज. ठीक है, जो आपके प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं, जब वो आपके हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं तो उनकी फिजिकली उसमें कुछ चेंजेस होता है. उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है. इंक्रीज इन ब्लड रेड ब्लड सेल साइज, और इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस, और इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज इन थर्मोबायोसाइट काउंट, थ्रोम्बोसाइट सॉरी, increase in thrombocyte count. Choose the right options. So what is the right from these? So here is the right option is option B. B and C is the right here. Increase in red blood cells productions and increase breathing rate. ठीक है, ये दोनों ही बढ़ते हैं. Next question on your screen, and here is a two surprising questions for you. We have just mentioned that 30 MCQs, but we are just also two magical questions we are just getting for you. Which one of the following statements is not correct about primary bronchi? आपकी प्राइमरी ब्रोंचिक से रिलेटेड आपका कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको बताना है. द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू द प्राइमरी ब्रोंची. प्राइमरी ब्रोंची सप्लाइज एयर टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स. दीज आर लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड sequence epithelium. Sporting cartilage of primary bronchi is plate-like shaped. प्राइमरी ब्रोंची से रिलेटेड क्वेश्चंस में यहाँ पर इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है. So I think you have just choose your right answer. So right answer here is these are lined with stratified squamous of epithelium. Next question on your screen, question number here is 32. The respiratory membrane through which gas must diffuse consist of the following aspects: alveolar cells and endothelial cells of the capillaries, lymphatic vessels, basement membrane, epithelial basement membrane, or capillaries basement membrane. So right answer is option B, lymphatic vessels basement membrane. So these are the questions for your physical education exams preparations. So I will what's the response by you, and what do you think about these question series? You can just comment and also just mention your feedback of this series. So these are questions, and we will meet tomorrow with again new series and with the new questions. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay home. Good night.